Praise the Lord, Highest Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotion time. Hallelujah. I want to welcome each one of you. प्रभु हम हर एक के साथ अच्छा रहा अभी तक प्रभु हमें चला रहे हैं अद्भुत रीति से प्रभु चला रहे हैं. There are many people who are unwell in our church, people going through different challenges, but we will continue to pray that my God's protection, God's healing, God's favor is over all our dear ones. Hallelujah. We've started the series three devotions back. या फिर last Tuesday हमने नया सीरीज शुरू किया, that is made to prosper. या फिर परमेश्वर ने हमें रचा है, बनाया है ताकि हम उन्नति को पाए. हमने उसके बारे में कई चीजों को कहा and we are taking from the book of 2 Peter, दूसरा पत्रुस का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां से लेकर 6वां 7वां 8वां वचन तक का जो वचन में जो पत्रुस कहता है, उसके आधार पर we are looking at how can we be prosperous in our life. I want to make it clear again, this is not about salvation. ये उद्धार के बारे में नहीं है. आपने और हमने उद्धार पा लिया. This is for the people who have already received salvation. हमने उद्धार पाया, स्वर्ग हमारे लिए रेडी है. लेकिन God says when you are in this world, I want you to be prosperous. And उसके लिए सिर्फ हमारा प्रार्थना, सिर्फ बाइबल पढ़ने से या फिर सिर्फ हमारे विश्वास से नहीं होगा. We need to have different qualities according to the word of God. हमारे जिंदगी में कई ऐसे गुण होने चाहिए जिसके द्वारा we can lead a good, successful, prosperous, healthy life in this world. Hallelujah. I can't do all the recaps, तो फिर मेरा पूरा 30 minutes निकल जाएगा. I want you to watch my last Tuesday, last Thursday और ये Tuesday के पिछले 3 ये सीरीज को पूरी तरह से हमारे चैनल में है, उसे आप सुनना. You will have an idea or a continuation of how does the word say या फिर scripture हमें कैसा सिखाते हैं ताकि हम prosperous हो. So few things that we spoke about from this word. यहाँ पर जो वचन में हमने पढ़ा उसके आधार पर कुछ चीजों को हमने already बात किया. The 5th verse, let's read it. For this very reason make every effort to add to your faith. हमने कहा हमारे हर एक के जिंदगी में विश्वास है, विश्वास है. आपको भी विश्वास है, मुझे भी विश्वास है. That is why we are children of God. अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होते तो हम परमेश्वर के संतान कभी नहीं बनते. It is only through faith that we have received Christ into our life. So we have faith. हमारे पास विश्वास है. लेकिन वहां पर पत्रुस कहते हैं विश्वास अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर पहला क्या होना चाहिए? गुडनेस. वहां पर लिखा है गुडनेस, या फिर हमारे जिंदगी में प्रार्थना और विश्वास के साथ अच्छे गुण भी होना जरूरी है. अच्छाई होना जरूरी है लोगों के तरफ, गरीबों के तरफ, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे घरों में, कलीसिया में, हम जहां जाए, God should and people should see the quality, the goodness, virtue in our lives. क्योंकि हमारे अंदर जब अच्छे काम, when we are able to do good things, the Bible says what we sow, we will reap. Isn't it? हम जो बोएंगे हम उसी को पाएंगे. अगर हमारे अंदर अच्छाई है, so we will be doing good to people. हम दूसरे लोगों के लिए अच्छाई करते रहेंगे, and one day all those things will come back to us. That is why पत्रुस कहता है विश्वास के ऊपर अच्छाई होना चाहिए. अच्छाई के ऊपर फिर हमने कहा नॉलेज होना चाहिए. हमें विजडम, बुद्धि होना बहुत जरूरी है. we need the wisdom from above. इस दुनिया का ज्ञान और परमेश्वर का वचन का ज्ञान. And the Bible says fear of the Lord is the beginning of wisdom. जब हम परमेश्वर में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें ज्ञान देंगे that we are able to take the right decisions always in every area. हर एक विषय में परमेश्वर हमें ज्ञान देंगे so that our ways are right in Him, which will take us to prosperity. और पिछले ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे को we spoke about self control. अगला चीज self control. self control को हिंदी में कहेंगे नियंत्रण. अपने आप के ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है. It's a very interesting topic. और वो self control को हमने last Tuesday को we couldn't finish the topic, so we are continuing that self control. Self control क्या है?
एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन, हमारे अंदर ऐसा एक निश्चितता है कि हम इसी विषय को करेंगे। दैट इज सेल्फ कंट्रोल। दुनिया में हर एक लोगों को ऐसा एक इच्छा है कि हम दूसरों को कंट्रोल करें, दूसरे लोगों को, ऑफिस में, जहां पर भी हमें, वी वांट टू कंट्रोल थिंग्स। एवरीबॉडी लव्स टू कंट्रोल। हर एक लोगों में है कि हम दूसरों को कंट्रोल करें, लेकिन वचन कहता है दूसरों को कंट्रोल करने से पहले या फिर उससे अच्छा ये है कि वी लर्न टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। दैट इज सेल्फ कंट्रोल। एंड सेल्फ कंट्रोल, हमने जो रिकैप है, सेल्फ कंट्रोल कैन बी टॉट, उसे सिखाया सकता है, वो लर्न किया सकता है, या फिर हम सीख सकते हैं। इट कैन बी डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड। सो हमें ये जो नियंत्रण, अपने आप को नियंत्रण करना, उससे हमें प्रैक्टिस करना है। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, या फिर टीवी में मैंने कहा, व्हेन यू आर एंग्री, क्या बोला, यू काउंट फ्रॉम 10 to 1, लाइक उल्टा 10, 9, 8, 7, ऐसा काउंट करना। तो मैंने ऐसा बीच में एक प्रोग्राम देखा जहां पर एक पति अपने पत्नी से कहता है, ओ यू आर एंग्री, आप गुस्से में हो, आप काउंट कीजिए 10 से पहले। तो उन्होंने कैसा काउंट किया, 10, 1 हो गया। सो दोज आर ऑल वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग, या फिर वेज ऑफ डेवलपिंग हाउ टू control ourselves. I don't know how does that work, that counting, but maybe it works for somebody. But the Bible says you and I have a Holy Spirit. हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा है जो हमें अलार्म करेंगे, जो हमें अलर्ट करेंगे, where we have to control, how we have to control. And when we surrender ourselves to that Holy Spirit, जब हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा में समर्पित करेंगे, He will enable us to develop that self-control in us. Hallelujah. Last week हमने कहा कि which are the areas, हमारे every Tuesday को we spoke about the areas where we would need self-control. हमने दो विषय कहा, मेन दो विषय। पहला है इमोशंस, हमारे भावनाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। If we cannot control our emotions, you can never ever live a joyful life. नहीं, क्योंकि आज अच्छे होंगे, शाम को किसी ने कुछ कह दिया, शाम को कुछ परिस्थिति आ गया, इमोशनली यू आर ब्रोकन डाउन। आज वी विल स्पीक अबाउट प्रेयर, विल स्पीक अबाउट गॉड। कई लोगों को मैंने देखा, कभी कभार दे विल स्पीक टू मच ऑफ गॉड, बहुत परमेश्वर के बारे में कहेंगे, ओ ऐसा है, सिस्टर बी स्ट्रांग, ब्रदर बी स्ट्रांग। लेकिन जब उनके जिंदगी में छोटा सा कुछ आ गया, किसी ने कुछ हल्का सा कुछ बोल दिया, they are emotionally so drained out and they're like, oh nobody wants me, nobody is there. That's emotionally no control. वचन कहता है we have to control our emotions if you want to be successful in your life. Second, we spoke about very important thing, speech. हमारे वचनों को, हमारे बोलचाल को, या फिर हमारे वर्ड्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा वर्ड्स, हमारा ये जो जीभ है, टंग है, इट कैन प्रोड्यूस फायर, कंप्लीट फायर। जहां पर भी जाओ, अगर उसमें कंट्रोल नहीं हो तो क्या होगा, वहां पर आग लग जाएगा। देखो हमारे जिंदगी में कहां पर आग लगा हुआ है, हमारे रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, कलीसिया में, जॉब्स में, जिधर भी आग लगा हुआ है, वन ऑफ द मेन रीजन इज हमारा वर्ड्स। So we need to control our words. If we cannot control our words, क्या होगा? We cannot be prosperous according to the word of God. So we will control our emotions and we will control our words. Now we will move to the next point. What is that we need to control? We need to control our reactions. Self control. हमें नियंत्रण करना है हमारे reactions में. Every action has a what do you say? Every action has a some reaction, isn't it? हर विषय में एक reaction होता है। जब लोग हमारे साथ कुछ कहेंगे, when people speak to us something, या फिर when people talk, हमें कुछ advice देते, there are times where we lose our cool. मेरे साथ भी हुआ, ये कई बार हुआ, and later on we lose our cool and we react so much. हम लोग उधर exaggerate. We जितना react करना चाहिए, okay, yeah, इतना, लेकिन हम कैसे, ओ तुमने ऐसा क्यों कहा, ओ हाउ कुड यू टेल दिस टू मी, ये आप मुझे क्यों कहा, हाउ कैन यू डू दिस टू मी। इट कैन बी वन सॉल्ट सिंपल थिंग वेयर आई कुड हैव जस्ट रिएक्टेड पीसफुली, जिस पर मैं आराम से, या आई कुड हैव जस्ट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम,
we can handle it, we can manage it. नहीं, हम क्या करेंगे? We will overreact on situations where later on क्या होता है? We find it, oh, why did I react? शायद रात को भी react too much and morning then after वो sleep, नींद के बाद जब उठेंगे we're like, why did I react too much last night? इतना क्या था मुझे react करने के लिए? लेकिन वो समय में, that moment where things are just coming out, हमारे अंदर से जब आ रहा है, if we can control our reactions, I'm telling you, our life will be better, very, very, very better. Yes, much, much, much better. That's the right word. Much better. कई areas में हमारे जिंदगी में, if we don't react to things too much, I'll tell you simple reactions का. अभी ये कोविड का हमें पता है, we all know about this COVID. Initially when कोविड का हमें पता चलता हमारे कॉम्प्लेक्स में या फिर हमारे एरिया में किसी को कोविड मिल गया, my God, the reaction would be like, we are like, इतने हम डर जाते थे. We were all of us, I'm not blaming anybody, we were all in the same boat. हम सब घर के अंदर, my God, पूरा सैनिटाइजर में we would take bath and still we are worried, still we are scared. बाजी sanitizer, wallet sanitizer, everything, kapda sanitizer, we would come and put our clothes inside the bathroom for 2-3 days. Why? Because somebody said something ऐसा है वैसा है, and that fear caught into us so much. Everybody, I'm not talking about 1 or 2 people, 99% people, we were all scared, we were all worried, and I'm telling you, we should react. Yes, हम हर एक का एक रिएक्शन होना चाहिए. कई लोग हैं जिनको रिएक्शन ही नहीं है, अच्छा हो खराब हो, there is no reaction. That's very wrong. ऐसा नहीं होना चाहिए. We should be expressive. हमें रिएक्शन होना है, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना, where we have to regret later on. उसका एक वचन मैं दूंगा, Proverbs chapter 19, नीति वचन, उसका 19वां अध्याय, नीति वचन 19वां अध्याय, 19th chapter, उसका 11th verse, 19 का 11. What does it say? It says, a man's wisdom gives him patience, self-control. It is to his glory to overlook an offense. वहां पर कहता है, एक व्यक्ति जिनमें ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो क्या देगा? उसे धीरज देगा, या फिर वो हर चीज में ओवर रिएक्ट नहीं करेगा. Then it says, it is to his glory to overlook an offense. या फिर जब उनके सामने, या फिर जब कुछ सही नहीं हो रहा है, या फिर when people talk something ill about him, उसके जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा है, he will not simply overreact. He will use his wisdom. He will think, should I or should I not? We need to be very careful. How do we react to our situations? Be at peace. The Bible says, be still and know that I am your God. When challenges come, when difficulty comes, when rejections come, when issues erupt, how do we handle it? This is not only for you, this is for me. मेरे लिए भी है. Sometimes even in that nature, कई बार मैं भी कैसा हूँ, overreact हो जाता है. And within no time, within like half an hour, maybe 1 hour, I feel, was it required? Better is we have self-control. Quickly, I will go. नहीं तो आज भी मेरा ये निकल जाएगा. So, reactions पर control करना. 4th one, time. Controlling time, self-control. Controlling, we need to determine what are we going to do with the time that God has given us. Very important. Many people waste their lives still figuring out. कई लोगों को, especially youngsters को मैंने देखा, they are still trying to figure out, मैं ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे मिनिस्ट्री करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे MBA करना है. People are still trying to, and every year, एक साल, 2 साल, they are wasting. Don't. Everybody gets 24 hours. हर एक व्यक्ति को, अंबानी को भी, बिल क्लिंटन को भी, ट्रम्प को भी, हमें भी, हर एक व्यक्ति को सिर्फ 24 घंटा ही मिलता है दिन में. But many people use it well. Some of them don't use it well. That's the change. That's the difference. Many people, कई लोग उस समय जो 24 घंटा उन्हें मिलता है, they will use it well.
सोकर नहीं निकालेंगे. They will use it well. They want to plan everything well and they will do it. But some of them will just wail it away thinking कल भी 24 घंटा मिल जाएगा. Self-control. Control the time that God has given us. If we don't determine how we will use our time, listen to this. If we don't determine, अगर हम निश्चय नहीं करेंगे या फिर हम कंट्रोल नहीं करेंगे जो समय परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसका कैसा उपयोग करेंगे, others will decide for us. दूसरे लोग निश्चय करेंगे कि आपका समय के साथ क्या करना है. समझ लीजिए, अगर मैं डिसाइड करूं आज मेरा दिन है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, आज मेरा दिन है, आज का दिन में मैं ये करूंगा, आई विल प्लान दिस आउट, दिस टाइम आई विल स्पेंड विद माय फैमिली, दिस टाइम आई विल स्पेंड विद माय वर्क, दिस टाइम आई विल गिव इट फॉर माय मिनिस्ट्री, दिस टाइम आई विल गो आउट फॉर अ ड्राइव. ये अगर मैं निश्चय नहीं करूं, अगर मेरे पास वो क्लियर कट प्लान नहीं है, निश्चिंता नहीं है, somebody will come and say come on, आज ये है, वो करना है, उधर जाना है, इधर जाना है. Why? Because we do not have a proper determination, control over the time that God has given me. I need to have right control, right knowledge, wisdom, determination to see the time जो परमेश्वर ने मुझे दिया, I'm making the best use of it. Best use of it. Hallelujah. Ephesians chapter 5, एफिसियों किताब उसका 5वां अध्याय 15 और 16 वचन में, there it says, be wise and make use of every opportunity in your life. Be wise, हमें बुद्धिशाली होना है, हमें every opportunity जो परमेश्वर में अच्छी opportunities दे, we need to take the right use of those opportunities, or else 5 years down the line, 10 years down the line, we will regret. I will tell you simple. 2011 में जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि कलीसिया शुरू करो, चर्च शुरू करो, I went and I spoke to the pastor. हमारा जो कलीसिया का पास्टर था जहां पर मैं था, I did not fight. मैं वहां पर कोई झगड़ा करके नहीं निकला. I went there and I spoke to him saying that pastor, it's been 2 years. I left my job. 2009 में I left my job and I moved into ministry. But I did not have a right direction of what needs to do. God was preparing me. And now God says it's time for you to start a church. और तब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ने, क्योंकि मुझे डर था, I had lot of fear in me, मुझे टेंशन था कि प्रभु कैसा होगा, how will I be able to start ministry, how will I be able to manage a church, या फिर लोगों को, या फिर प्रचार, because I could not speak well. मैं वैसा प्रचार नहीं कर पाता था. I've never been to a Bible college. तो ये सारे जो मन में questions आए, so I was asking God, is it the right time? Is it the right time? Or should I wait for more time? I know that there will be a lot of issues होगा, तकलीफें होगी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा. ये सारे questions जब आए, you know what the Spirit of God, I believe it is the Spirit of God, एक question मेरे अंदर डाला, या फिर एक word मेरे अंदर डाला, if you don't take the decision today, 10 years down the line, you will regret. वहां पर पवित्र आत्मा ने, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर, मैं चर्च में बैठा हूं सुबह 11 बजे 24th of April, आई एम स्केर्ड, आई एम लाइक गॉड, शुड आई डू इट, मुझे करना है नहीं करना. एक तरफ से वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे कह रहा है, डू इट, इट्स योर टाइम टू मूव आउट एंड स्टार्ट अ चर्च, अगले हफ्ते से तुम्हें कलीसिया शुरू करना है. लेकिन मैं वहां पर एक, क्या बोलते हैं, रेसलिंग हो रहा है परमेश्वर के साथ. गॉड, इज इट द टाइम, ये करना है. ओ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा मेरे लाइफ में, लोग कैसा लेंगे, लोग क्या बोलेंगे. All these things were just going on and on. That wrestling is going on. That's when the Spirit of God says, if you don't take a step today, take the good use of the opportunity today, 10 years down the line, you will regret. जब वो मेरे मन में, I just got up, मैं वहां से उठ गया. Then I went and told the pastor, I need to take this step today. And from that day till today, it's been 9 long years. Pavitra Atma, every day he is leading me. Hallelujah. That's how. Make use of the time that God has given you. Don't wait for tomorrow. Today is the day. You want to do something for the Lord? Today is the day. You want to pray? Today is the day. You want to come to church? Today is the day. Don't wait. Oh, everything settle over. Nahi. When God gives me an opportunity, I am there. I am there. That's how we use the time that God has given. So have self-control over our time. Quickly. Then
Very important. Control over money that God has given us. Self-control. Money, paisa. Money is one of the most powerful thing or tool in the world today. है कि नहीं? पैसा है तो सब कुछ है. This is what the world says. पैसा है तो सब कुछ है. पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है. To some extent, it is true. You need money because that is the only medium of exchange in the world. आज दुनिया में पैसा, money is the exchange. That's how the world sees them. हम बोलेंगे विश्वास है लेकिन पैसा नहीं. विश्वास चाहिए लेकिन when we are in the world, we need financial blessings. We need money and God brings money to us. I believe it. I believe. So never say I don't need money. No, we all need money. हमें finances चाहिए. जब पैसा नहीं होता, I know the kind of stress what families go through. I know the stress what pastors go through. I know the stress what ministries go through. Many. Oh, come on, it is really hard. So never say, God, I don't need money. We need money. But the thing is, how am I using that money? Am I letting that money control me or am I able to manage it well? That's very important. Don't let money, have command over your life. इसका मतलब यह है कि हमारे जिंदगी में पैसा जरूरी है लेकिन पैसा सबसे जरूरत नहीं होना चाहिए. Money should not take the role of your God, the position of our God. Money should not take the position of my parents. Money should not take the position of my family, my spouse, my husband, my wife, my children. Money should not take the position of my individuality. उसके बाद में होना चाहिए. We need money. हमें हर एक को पैसा चाहिए लेकिन it should not be prioritized more than relationships, more than our worship, more than our God, more than our ministry, more than our commitment to God, more than our dedication, more than our service. Don't let money take that position. जब money वो position ले ले, those areas will be broken. Yes, write it down. When money takes the position of your family, when you prioritize or when I prioritize money more than my family, my children, my parents, there will be problem in my home. There will be accounting in my home. There will be questions. Where is my money? Where is your money? What did you do? These are all things. These money talks happen in our homes. These fights happen in our homes. Arguments happen for money in our home because we have given more importance to money than our relationship. Don't let that happen. That's dangerous for a child of God. Oh, हमें लगे चलो थोड़ा पैसा कमा ले. We will not be able to use that money. Come on. We will not be. We might just be able to store it. उसे बनाकर रखेंगे, बैंक में डालेंगे. Somebody else will use it. We will never be able to use that money. Money is important. Listen to me very clearly. I am not saying money is not required. For the church, money is important. For the ministry, money is important. We need money to run the church. Lekin, money will never take the position of ministry over relationship. No, never. That is why I would say, in the last 9 years, I have never, by grace I'm telling you, it is not my quality, it is by grace, completely by grace. We've never been worried about how money, or never let God allow me or our team to put our hand before anybody till now for money. But at the perfect time, God provides. Why? Because we give priority to God. We give priority to people who come into the church. We give priority to relationships. We give priority to worship and rest. God brings it to us. That's His promise. If that's the case for a church, अगर वो कलीसिया के लिए ऐसा है, तो आपके लिए और मेरे लिए भी, I am telling you, don't let money have command, authority, power over your life, but you control it. Hallelujah. Praise the Lord. Proverbs 11:28, नीति वचन 11वां अध्याय उसका 28वां वचन में, whoever trusts in the riches will fail.
वहां पर वचन कहता है, इट्स वेरी पावरफुल. इट सेज जो व्यक्ति मनी पे, पैसे पे, रिचेस पे, प्रॉपर्टी पे, घर पे, शेयर्स में, मार्केट में, इफ आर ट्रस्ट, आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, वी नीड ऑल दैट. We need savings. Don't take me wrong. मुझे आप गलत नहीं लेना. No, we need savings. हमें जॉब्स चाहिए, हमारा बिजनेस बढ़ना है, हमारा शेयर मार्केट होना है. We need trading. All these things are required. But for a child of God, my trust should never be in that. My trust should be in my God. My trust, my belief is in my God. My dependency is on my God. Completely. Trust in my God. Because the Bible says, if we put our trust in our riches, riches can go like this. But God says, I will never leave you. I will never forsake you. When we trust God, God will enable our savings to increase. He will enable our work to increase. He will enable our business to flourish because He knows that this child doesn't trust that money, but he trusts me more than anything else in the world. That's self-control over the money that we have. Amen. Hallelujah. Money is important. Listen to this. I hope people agree to this. Money is important, but it is not the most important thing in our lives. Hallelujah. I will leave it there. The last one, where we need self-control. Our health and our food. That's very important. This is a word for me especially. Our body is the temple of God. वचन कहता है ये जो शरीर है, ये जो शरीर है परमेश्वर ने जो रचा है, this is the temple of the Holy Spirit, temple of God, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है. So we need to ensure that I keep this body in good health. You getting it? Food. We need to have control over our food. The food that we eat. I am telling you, in fact, I am telling myself this word. This is the word, this is a prophetic word to my own self. जैसे दाऊद कहता, oh my soul, why are you worried? Why are you anxious? मैं कह रहा हूँ, अपने आप से कह रहा हूँ, we need to take control over our body and our health. We need to control the food that we eat. We should not overeat. बिकॉज ये सारे चीजें कई बार हमारे शरीर में तकलीफें, बीमारी, इश्यूज ले आते, विच इज काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिंग द टेम्पल ऑफ गॉड. ये जो परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर का मंदिर है, वी आर काइंड ऑफ ब्रिंगिंग इश्यूज इन दैट बॉडी बाय नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट वेल. कम ऑन, आज दुनिया में आफ्टर द लॉकडाउन ईटरीज आर द मोस्ट वाइडली स्प्रेडिंग थिंग. हम हर एक जगह पर जाओ, ईटरी, सम न्यू स्नैक, न्यू आउटलेट्स हैव ओपनड अप. जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, आवर फर्स्ट इंटेंशन शुड नॉट बी गो टू एवरी ईटरी एंड ईट. हम लोग कई बार वही सोच रहे, यार ये खुला है, चलो जैसे लॉकडाउन खत्म, कल उधर, परसों उधर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग. इन 1 month क्या होगा? वी विल पुट ऑन वेट, वी विल हैव हेल्थ इश्यूज, और हमारे अंदर तकलीफें होंगी. God says control. Self-control is important when it comes to our food. Proverbs 21:20, नीति वचन 21 का 20वां वचन, वहां पर से each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. उसका मतलब यह है कि we should know how to take care of this body. Little bit of exercise is important. Little bit of walk is important. Little bit of maybe cycling is important. We need to take care of our health well. नहीं तो क्या होगा? We will be unwell. We'll have to be on medications, and we will not be healthy in our body. हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होगी. So God says, I want you to be healthy always. अगर 80 साल है, 90 साल है, 120 years है, God wants us to have a healthy life. It's not just a long life, but it is a healthy life, and that's possible when we are able to control our lifestyle, our food, our health well. And I'm telling you, if we follow these steps, self-control में, I'm telling you, God will bring prosperity. Prosperity is kept for us. It is kept for you and me. We need to possess it. And these are steps. These are
those little baby steps. ये वो steps है जिस पे से हमें चढ़कर उस prosperity को claim करना है हमारे जिंदगी में. Hallelujah. I'll tell you a simple example. There are many people who are very rich. I know one of my, मेरा एक boss था, उनका family में, he was saying, I think it was his mom or they were filthy rich, बहुत पैसे थे, बहुत पैसे, लेकिन she got high sugar, high BP and lot of cholesterol, lot of issues, इतने सारे health issues है that she cannot eat anything in the house. All that she has to survive is little oats, little that, little this. And it's not that she's very old, उतने ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, सब कुछ है लेकिन can't eat. Why? Because no control in their initial life. उन्होंने control नहीं किया. For the young people, youngsters, children, elders, all of us, to myself, it is very important. It's an alarm for us that we have control over our food and lifestyle that will enable us to have a healthy life ahead. That is prosperity to us. वो हमारे लिए एक उन्नति है. Hallelujah. God has made a way for us to have a prosperous future. परमेश्वर ने हमारे लिए एक उन्नति का भविष्य परमेश्वर ने रखा है. It takes more than just our willpower. हर एक व्यक्ति परमेश्वर के संतान, listen to this, it is more than a willpower. जो मैंने कहा था कि सेल्फ कंट्रोल एक विल पावर है, एक डिटर्मिनेशन है, उससे ज्यादा बढ़कर it takes power that is greater in us. जो पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया. We surrender ourselves to that Holy Spirit. That Holy Spirit will alarm us. That Holy Spirit will guide us. That Holy Spirit will give you that strength and He will enable you to practice and develop these qualities, what Peter says. जब हम इन विषयों को पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता से, I am telling you, it will bring prosperity to us. Final one word. 2 Timothy chapter 1 verse 7. हमें पता है ये word. 2 Timothy chapter 1 verse 7. वहां पर वचन कहता है, For God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, but of power and love and self-control. वहां पर कहता है जो पवित्र आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर ने आपके और अंदर, मेरे अंदर दिया है, वो भय की आत्मा नहीं है, वो फिर किसकी आत्मा है? इट इज सामर्थ. वो सामर्थ देता है, वो प्रेम देता है, अच्छाई देता है, लव देता है. एंड थर्ड इट सेज इट गिव्स यू सेल्फ कंट्रोल. हमें सेल्फ कंट्रोल देता है. These days, let's surrender ourselves to the Lord and say, God, I need that self-control completely so that we can live a beautiful, healthy life. Not just for us, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे आजू बाजू जो होंगे उनके लिए भी वो एक आशीष का कारण होगा. अगर मेरे अंदर ये गुण है, ये सेल्फ कंट्रोल है, तो मेरे फैमिली में भी they will also have a joyful time. अगर मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, they will also lose their control. फिर घर के अंदर वर्ल्ड वॉर 4 होगा. So we need to have self-control so that we are blessed, our people around are blessed, and wherever we go, we bring joy. Hallelujah. आइए हमारे आंखों को बंद करके we will pray. Precious Father, we thank you for this wonderful evening. Thank you, God, for keeping us all safe under your mighty wings. Thank you, God, that you enabled us to take this 30 minutes, Lord, from all our busy schedules. Keep it away. And Lord, very few of us, but we could come together in your presence and learn from your word. Yes, Lord, it is your plan for us that we will prosper in every area of our life. And we thank you, God, for the Spirit that you have put into us that will bring power and love and self-control. Enable us to have control, self-control, Lord. Control over our time, control over our emotions, control over our words, control over our money matters, control over our reactions, control, self-control over our body, our lifestyle, our food. Father, control over every area of our life, Lord. Though that nothing in this world dominates us, but we are able to have control over every situation, Father, because your word says you have called us to be the head and not the tail. We thank you, God, for this word. Lord, I pray as we continue to learn these days, Lord, I pray let it truly bring prosperity to us. Bless us together.
Above all, help us to learn this word. Oh, help us to speak this word and practice it in our life, Father. I submit myself to in your hands. Lord, every word that I've spoken, enable me also to practice it as much I can, Father. Help me these days. Bless us all once again. We give glory, honor, and praise to you alone. We thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' most mighty name, we make this prayer. And all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. So, practice self-control these days. Next Tuesday, we will come with the next topic. Don't forget to log in next Tuesday for our devotions. May the Lord continue to bless us as we learn this word, made to prosper. Till then, stay anointed, stay blessed. God bless you.